Hello, my dear students. Welcome to our workshop, 7th standard NSO exam workshop. I have started, and in this NSO workshop, chapter number 1, 2, 3, I have already completed. Today, I am going to start chapter number 4, physical and chemical changes. This chapter you have already learned in 6th standard. Okay, 6th standard में भी आपको same chapter था, that is physical change, and next one is chemical change. So chapter number 4, physical change and chemical change. Physical change and chemical change. NSO workshop. Chapter number 4, physical and chemical changes. I am going to start. In our surrounding, there are hundreds of changes occurs at a time. There are so many changes which are present in our surrounding. For example, we on the bulb, we off the bulb. Okay, then next one, that is melting of ice. Then next one, rusting of iron. Next one, falling of leaves from the tree. Then flowering of bird, cooking of the food, rotting of the food, vegetables are the some example of changes which are present in our surrounding. Now there are the different category of changes. Some changes are desirable change and some changes are undesirable changes. Some changes repeated at regular interval of time and they are called periodic change, and some changes do not repeated at regular interval of time, they are called non-periodic change. Like this there are the different type of changes. So now I'm going to start first type of change, that is physical change. So physical change, and next one is chemical change. So first one, that is physical change. So a change in which there is a change in physical property of the substance, like सब्सटेंस का शेप चेंज होता है, साइज चेंज होता है, कलर चेंज होता है, स्टेट चेंज होता है, आर कॉल्ड फिजिकल चेंज. Okay, a change in which substance shape change, size change, color change, state change are called physical change, and in those changes are the basic composition of the substance remain same. So after change होने के बाद composition of the substance remain same and no new substance is formed. This one is the condition of physical change. So first one, that is changes happen in physical property of the substance. Changes होते हैं, इसमें changes होते हैं, changes in physical properties of the substance and composition of the substance do not change. जो ओरिजिनल सब्सटेंस है जिससे चेंज होता है, composition of the substance do not change, and next one, no new substance form. Okay, physical change में कोई भी new substance form नहीं होता है. Now which are the characteristic of physical change? First characteristic, that is no new substance are formed. So this one is the definition. Now which are the characteristic of the physical change? First characteristic, that is there is a no
new substance is formed. Okay, keep in mind, there is a no new substance is formed. A physical change is generally reversible and thing can get back from their original substance. So physical changes generally कैसे होते हैं? That is reversible. Okay, we can come back. That is called physical change. And in the physical change, property of the substance remains same. ओके जो सब्सटेंस है उसकी प्रॉपर्टी रिमेन सेम रहती है इवन इफ देयर द चेंज इन फिजिकल स्टेट उसकी स्टेट भी चेंज हो गई तभी भी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम रहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस रिमेन सेम कोई भी सब्सटेंस है उसकी स्टेट चेंज हो गई स्टेट चेंज होने के बाद भी उसकी प्रॉपर्टीज कैसे होते हैं सेम होती है सो प्रॉपर्टीज लाइक अपीयरेंस texture, color, smell may change in a physical change. Physical change में कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होती है टेक्सचर है कलर है स्मेल है may change in a physical change and chemical property of the substance remain same and next one chemical property of the substance are same here properties of the substance same substance की properties same रहती है even chemical properties is also same ice है water है same है chemical properties is same and they may or may not be evolution of heat कोई भी फिजिकल चेंज है कंपलसरी नहीं है कि उसमें इवोल्यूशन ऑफ हीट होना चाहिए मे और मे नॉट बी इवोल्यूशन ऑफ हीट एंड फिजिकल चेंज में मेनली क्या चेंज होता है चेंज इन फिजिकल स्टेट of the substance. For example, water change from liquid to gaseous state or solid to liquid state. There is a no chemical change in structure. So ice में जो chemical property है वही chemical properties water में है and वही chemical property water vapor में है. So there is a no change in chemical property of the substance substance के जो chemical property है उसमें कोई भी change होता नहीं but change किसमें होता है only in physical property of the substance some substance disappear during the physical change but can recover after the change okay so physical change में क्या होता है some substance disappear during a physical change but can be recovered after the change physical change में कोई substance disappear होता है but we can recover it so this one is about the physical change now ये जो physical change है mostly 99% mostly physical change कैसे होता है that is the reversible and irreversible mostly reversible होता है but there are some cases कि physical change है and irreversible है okay mostly कैसे है reversible ही है so physical change mostly okay mostly 99% physical change कैसे होता है reversible what is the meaning of reversible we can come back ओके देखो आइस है आइस का वाटर हो गया मुझे वाटर नहीं पसंद मुझे फिर से आइस चाहिए मुझे फिर से वाटर का आइस मिल जाएगा यस वी कैन रिवर्स कम बैक मेरे पास स्प्रिंग है उसको मैंने स्ट्रेच की मुझे फिर से स्मॉल स्प्रिंग चाहिए यस वी कैन रिवर्स कम बैक that is called reversible change so reversible change कि जिसमें हम रिवर्स आ सकते हैं फिजिकल है रिवर्सिबल है नाउ फिजिकल चेंज है बट इरिवर्सिबल है फिजिकल चेंज है बट कैसे है
इरिवर्सिबल है। सो फिजिकल चेंज दोनों होते हैं, दैट इज रिवर्सिबल, सॉरी मैं 99 बोली, वैसे नहीं है, केमिकल चेंज में ही। ओके, फिजिकल चेंज दोनों है, रिवर्सिबल भी होते हैं एंड इरिवर्सिबल भी होते, फिजिकल चेंज दोनों होते। सो विच आर द एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल फिजिकल चेंज? मेल्टिंग ऑफ आइस, मुझे आइस पसंद नहीं, फिर से वाटर चाहिए, रिवर्स हो सकता है, यस। आई हैव एड शुगर इन वाटर और साल्ट इन वाटर एंड आई वांट शुगर अगेन एंड साल्ट अगेन, रिवर्स हो सकता है, यस। ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स, क्लोथ्स ड्राई हो गए, मुझे फिर से वेट करना है, हो सकता है, यस। देन सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, कैम्फर है, उसका सब्लिमेशन किया, सब्लिमेशन मीन्स व्हेन वी गिव द हीट टू द सॉलिड सब्सटेंस, ओके, सब्लिमेशन हो गया है आपका, सब्लिमेशन। सो व्हेन वी गिव heat to the solid substance, it directly changes into gas, and that is called sublimation. And when we collect that vapor, we again obtain the solid, and that is called desublimation or deposition. So this one is also physical change. Sublimation of camphor is also physical change. Now tearing of paper, स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर की प्रॉपर्टी एंड ओरिजिनल बिग साइज के पेपर की प्रॉपर्टी सेम रहेगी। ओके, फिजिकल चेंज, ये भी पेपर है, ये भी पेपर है, बट क्या हो गया, इरिवर्सिबल। देन ब्रेकिंग ऑफ ग्लास ट्रम्बलर, स्मॉल पीस भी ग्लास है, बिगर साइज भी ग्लास है, प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस डू नॉट चेंज, केमिकल प्रॉपर्टी सिर्फ बड़ा का क्या हो गया, छोटा हो गया। सो ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, इट इज ऑल्सो इरिवर्सिबल चेंज। ग्रोथ ऑफ प्लांट, इट इज ऑल्सो फिजिकल है बट इरिवर्सिबल चेंज है। वेदरिंग ऑफ रॉक, वेदरिंग ऑफ रॉक फिजिकल है एंड इरिवर्सिबल है। सो दीज आर द एग्जांपल की जो फिजिकल चेंजेस है एंड इरिवर्सिबल है। टियरिंग ऑफ पेपर, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, ग्रोथ ऑफ प्लांट, वेदरिंग ऑफ रॉक। नाउ फिजिकल चेंज, चेंज इन स्टेट। नाउ फिजिकल चेंज में ही क्या, चेंज इन स्टेट्स, स्टेट चेंज हो जाती है। सपोज सॉलिड है, when I have given heat to the solid, it is changed into liquid and that is called melting. लिक्विड है, मैंने हीट दी, उसका कन्वर्शन गैस में होता है, that is called boiling, that is called boiling. Then और उसको वेपराइजेशन भी बोलते हैं, बॉइलिंग। और नेक्स्ट वन इज कॉल्ड वेपराइजेशन, बॉइलिंग और नेक्स्ट टर्म दैट इज द वेपराइजेशन। नाउ नेक्स्ट वन दैट इज गैस है, उसको हमने कूल किया, देन इट इज चेंज इनटू लिक्विड एंड दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। एंड लिक्विड है, उसको फिर से हमने कूल किया, that is changed into solid and that is called freezing. So this is the change in state of the substance. इसमें क्या होता है, substance की state change होती है। when we have suppose solid to liquid, उसके लिए हम heat क्या करते हैं, we give the heat, liquid to gas we give the heat, but gas to liquid we remove the heat, उसमें से heat remove करके उसको cool करते हैं। liquid है, liquid से solid we remove the heat। okay, so first process melting, then boiling or vaporization, then condensation, then freezing। along with this solid है, solid को आपने heat दी, उसका डायरेक्ट कन्वर्शन किसमें होता है, गैस में होता है एंड दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। एंड गैस है, उसको आपने यहाँ पे हमने हीट दी, प्लस हीट कर दी हमने, एंड गैस है, उसमें से आपने हीट रिमूव की, then it is again changed into solid and that is called desublimation or deposition। इसको क्या बोलते हैं हम, desublimation और
the substance. So the change in state, क्या होता है यहाँ पे, स्टेट चेंज होते जा रही है. सो सॉलिड है, लिक्विड लिक्विड है, गैस गैस है, लिक्विड लिक्विड है, सॉलिड. सो ऑन हीटिंग सॉलिड चेंज टू लिक्विड, लिक्विड चेंज टू गैस. ऑन कूलिंग gas to liquid, liquid to solid. Some solid directly change into gas, that is called sublimation. And when we cool down that gas or vapor, again solid on cooling, that is called deposition or desublimation. Then this one is also physical change. ये सभी क्या है, physical change है. Okay, so we have already discussed some example of reversible physical change and irreversible physical change. So this change in state of the substance, कोई substance है उसकी state change होती है, that one is also example of physical change. Now another example of physical change, that is expansion and contraction. Another example, that is expansion and contraction. Another example of physical change is expansion and contraction. Solid है, liquid है, gas है, so उसको आपने heat दी. Any substance, okay, solid है, liquid है, gas है, उसको आपने heat दी, उसकी साइज थोड़ी सी enlarge होती है, that is called expansion. वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, expand. एंड उसमें से आपने हीट रिमूव कर दी, उसको आपने कूल किया, उसका फिर से क्या होता है, that is contraction. Here सपोज मेरे पास कॉपर की मेटल की प्लेट है, उसको मैंने हीट की, एक्सपांड होगी. There is new substance is formed, no, सिर्फ expand हो गई. उसको कूल किया, सिर्फ contract हो गई. So no new substance is formed. That's why expansion and contraction कौन से टाइप का चेंज है, physical change. And property of the substance do not change. So expansion and contraction is also physical change. Solid liquid gas, उसको हमने हीट किया, उसका कन्वर्शन वो एक्सपांड हो जाता है, कूल किया, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है. नाउ गैस एक्सपांड मोस्ट व्हाइल सॉलिड एक्सपांड द लीस्ट. नाउ कौन सा सबसे ज्यादा एक्सपांड होता है, सो सबसे मोर एक्सपांड कौन होता है, गैस. देन इंटरमीडिएट कौन है, लिक्विड. एंड सबसे लेस कौन एक्सपांड होता है, दैट इज सॉलिड. एक्सपांशन सबसे हीट है, तीनों को हमने हीट दी, बट सबसे ज्यादा एक्सपांड कौन होता है, गैस. व्हाई, गैस के मॉलिक्यूल सेपरेट होते हैं, इजीली एक्सपांड हो जाते हैं. सॉलिड के मॉलिक्यूल क्लोज है, उसको दूर दूर होने में टाइम लगेगा ना, एक्सपांड होने में टाइम लगेगा ना. सो सबसे ज्यादा सबसे फास्टली कौन एक्सपांड होता है, गैस. देन उससे थोड़ा कम लिक्विड एंड सबसे कम सॉलिड. So this is the speed of expansion. ये क्या हो गया, expansion का and contraction का speed. Gases expand most while solid expand least. Now common example of expansion and contraction in our day-to-day life. So solid railway track, okay, railway track पे gap रखते हैं, okay, because of the heat, okay, that metal are expand and having the space for the expand. उसको expand होने के लिए space चाहिए. That's why gaps are kept in railway track to allow the expansion in summer and contraction in winter. Similarly, electric wire hung tightly between the pole for the expansion and contraction. जो इलेक्ट्रिक वायर होती है पोल के बीच में के टाइटली होती है, एंड समर सीजन में वो लूज हो जाती है. क्यों, मेटल की है, समर में एक्सपांड हो जाता है बिकॉज ऑफ हीट. नाउ लिक्विड, लिक्विड में भी एक्सपांशन होता है क्या, यस. Very good example is thermometer, and yesterday I have taught you about the thermometer, type of thermometer.
ओके, सो थर्मामीटर में मर्क्यूरी यूज होता है। मर्क्यूरी लिक्विड है, मेटल है। जनरली मेटल सॉलिड होते हैं, बट मर्क्यूरी एक्सेप्शन, मेटल होके भी क्या है, लिक्विड है। सो बिकॉज ऑफ आवर बॉडी हीट, mercury expand. If we, our body not having the heat, mercury level is normal. If in my body there is a heat, then mercury expand, and when I give the jerk, mercury contract. So expansion and contraction happen in the thermometer, especially mercury होता है हीट, बॉडी की हीट की वजह से एक्सपांड। मेरे बॉडी में हीट नहीं रही तो नॉर्मल, थोड़ा सा जर्क दिया तो कॉन्ट्रैक्ट। Now gases. So inflated balloon expand or sometime burst. Inflated balloon है, expand होता है when we fill the gases. Burst भी होता है, okay, because of more gases, more expansion of the gases, and contract if it cool the surrounding. So like this एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है, एंड गैसेस में भी होता है। सो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इज आल्सो फिजिकल चेंज। ये भी कौन सा चेंज है, फिजिकल चेंज। सो फर्स्ट फिजिकल चेंज आई हैव टॉट यू, दैट इज चेंज इन स्टेट। substance की state change हो जाती है। Then second one, that is expansion and contraction. Second one, expansion and contraction. That one is also physical change. Any substance when we dissolve in water, that is also physical change. Dissolution, dissolution is also the physical change. कोई सब्सटेंस है, उसको हमने वाटर में डिसॉल्व किया, डिसोल्यूशन। सो डिसोल्यूशन इज आल्सो फिजिकल चेंज। फॉर एग्जांपल साल्ट है, मैंने वाटर में डिसॉल्व की, बट नाउ मुझे फिर से साल्ट चाहिए। क्या होगा, मैं इसको हीट करूंगी या तो ऊपर रख दूंगी, बिकॉज ऑफ सन के हीट इवोपरेशन हो जाएगा, वाटर इवोपरेट हो जाएगा, मुझे फिर से साल्ट मिल जाएगा। सो फिजिकल चेंज, देयर इज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ है? नो। साल्ट के टेस्ट साल्टी है, जो वाटर में डिजोल्व किया वो भी साल्टी है। केमिकल चेंज हो गई क्या? नो। Okay, so dissolution is also physical change. Solid like glucose, salt, sugar, when we dissolve in water, we again obtain it by the process of evaporation, by the process of distillation, by the process of fractional distillation, we again obtain it. Now, next one, that is crystallization. Is also physical change. Crystallization है, pure crystal मुझे obtain करना है, is also physical change. So the process of forming the pure crystal is called crystallization, and crystal is the purest solid substance. सॉलिड सब्सटेंस का जो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है, दैट इज द क्रिस्टल्स, एंड क्रिस्टल हैविंग डेफिनाइट ज्योमेट्रिक शेप, दैट्स व्हाई उसको क्रिस्टल बोलते हैं। हम टाल्कम पाउडर यूज करते हैं, वो क्या है, पाउडरी फॉर्म है, बट जिसको क्रिस्टल्स होते हैं, दे आर हैविंग डेफिनाइट ज्योमेट्रिकल शेप। फॉर एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट में मैंने वाटर ऐड कर दिया, उसको हीट किया, स्टर किया, हीट करने के बाद फिर से कूल किया, तो मुझे कॉपर सल्फेट के प्योर क्रिस्टल्स मिलते हैं। ओके, सो बाय द मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हमें एलम के, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स मिलते हैं। सो दिस इज द मेथड टू ऑब्टेन द प्योर सब्सटेंस। So, change in state, expansion, contraction, dissolution, and crystallization are the some example of physical change. Now, I'm going to start next one, that is the chemical change. Srishti, is it okay about the physical change? Any doubt? So now, those are the four application of physical change: change in state, expansion, contraction, dissolution, and crystallization. Now, next one, that is chemical change. So, next type of change, that is chemical change.
chemical change. First one, a change that involve the formation of new substance having the property totally different from the original substance. It's called chemical change. New substance is formed. This new substance having compulsory new property than its original substance are called chemical change. Now, which are the characteristic of chemical change? क्या क्या chemical change में characteristic है? अभी मैंने एक characteristic बताया. Chemical change में new substance form होता है. So this is also characteristic of chemical change. Chemical changes are usually irreversible. Chemical change कैसे होते हैं? Irreversible. Usually irreversible. जैसे फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होते हैं वैसे केमिकल चेंज कैसे होते हैं इरिवर्सिबल द ओरिजिनल सब्सटेंस कैन नॉट ब्रॉट बैक one or more new substance is formed now जो केमिकल चेंज है इसमें one or more new substance form होते हैं how many substances are formed in the chemical change one or more new substance is formed and this new substance having the new property from the original so new substance having new property new substance है उसको new property उसको न्यू प्रॉपर्टी फॉर्म होती है न्यू सब्सटेंस हैविंग द न्यू प्रॉपर्टी देन इट्स ओरिजिनल सब्सटेंस now whenever there is a chemical change is formed heat is given out or heat light okay heat कोई भी chemical change होता है heat is given out or absorbed heat या तो देखते हैं नहीं तो लेते हैं heat is given out or absorbed. This is the characteristic of chemical change. Then, during the chemical change, heat, light, sound may be produced. कोई chemical change में heat form होता है, कोई chemical change में light form होता है, कोई chemical change में sound भी produce होता है. For example, oxygen gas. ओके जब हम ऑक्सीजन गैस बनाते हैं पॉप अप साउंड आता है आपने लास्ट ईयर होमी बाबा एग्जाम में एक्सपेरिमेंट किया था ओके पॉप अप साउंड पॉप अप ऐसे साउंड सुनाई देता है सो कोई केमिकल चेंज में हमें नाउ दिवाली इज कमिंग क्रैकर्स केमिकल चेंज है साउंड सुनाई देता है ओके सो हीट कोई केमिकल चेंज में हीट फॉर्म होती है फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड है सुना उसमें अपने वाटर ऐड के टच करो हीट फॉर्म होती है देन लाइट इज गिवन आउट साउंड इज गिवन आउट कभी कभी केमिकल रिएक्शन में गैस भी फॉर्म होता है आपने CO2 गैस बनाया था संडे साइंस स्कूल में ओके विनेगर एंड बेकिंग सोडा CO2 गैस भी फॉर्म होता है कभी कभी उसका कलर एंड स्मेल also चेंज ओके कोई न्यू सब्सटेंस है तो उसका कलर चेंज हो जाता है देन उसका स्मेल डिफरेंट आता है फॉर एग्जांपल अमोनिया गैस वी कैन आइडेंटिफाई फ्रॉम द स्मेल ये भी एक्सपेरिमेंट हमने होमी बाबा में किया था ओके क्या चेंज हो जाता है उसका कलर स्मेल आल्सो चेंज एंड अ चेंज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन ये जो चेंज है इसको चेंज नहीं बोलते उसको क्या बोलते हैं दैट इज chemical reaction so these are the characteristic of the chemical change or chemical reaction ये क्या है chemical change and chemical reaction के characteristic है like new substance is formed new substance having new property heat is given out heat is absorbed heat light sound gas produce okay like this now characteristic of chemical reaction so मैंने अभी बताया in some chemical reaction gas is given out कोई chemical reaction में क्या होता है गैस बाहर निकलता है एक CO2 का एक्सपेरिमेंट तो सबको पता है so first one that is evolution of gas evolution of gas means in a chemical reaction gas is given out
ओके, तो हम गैस की वजह से आइडेंटिफाई करेंगे कि ये केमिकल चेंज है। सो जिंक मेटल है, उसमें हमने सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स किया, हमें जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैसेस गिवन है। जिंक एक मेटल है, H2SO4 एक एसिड है, उन दोनों की रिएक्शन होगी, हमें मिल गया जिंक सल्फेट एंड इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन गैस इज गिवन आउट। ये रिएक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस इज गिवन आउट। नाउ नेक्स्ट वन दैट इज चेंज इन कलर। कोई कोई केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, चेंज इन कलर, कलर चेंज हो जाता है। सो उसका कलर चेंज हो गया, वी कैन आइडेंटिफाई दैट इज द केमिकल रिएक्शन। A change in a chemical reaction, the product form having the different color than the reactant. For example, copper carbonate. When we give the heat to copper carbonate, ओके, कॉपर कार्बोनेट ये जो है CuCO3, कॉपर कार्बोनेट, उसका कलर है ग्रीन। कौन सा कलर है, कॉपर कार्बोनेट का ओरिजिनल कलर है ग्रीन। उसको हीट करने के बाद मुझे मिलेगा कॉपर ऑक्साइड CuO, एंड CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट। सो कॉपर कार्बोनेट का कलर कौन सा है, ओरिजिनल कॉपर कार्बोनेट ग्रीन कलर का है, बट हमें जो कॉपर ऑक्साइड मिलता है दैट वन इज द ब्लैक इन कलर। क्या हो गया, कलर चेंज हो गया। सो वी कैन से दैट यस इट इज द केमिकल चेंज, यस इट इज द केमिकल रिएक्शन। अगेन जिंक है, जिंक क्या है, एक मेटल है, कॉपर सल्फेट है, हमें जिंक सल्फेट मिलेगा। ओके, दस आर द रिएक्टेंट जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं। ओके, दस आर कॉल्ड रिएक्टेंट, एंड जो न्यू फॉर्म होता है उसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट। ओके, रिएक्टेंट एंड नेक्स्ट वन इज प्रोडक्ट। नाउ ये जो कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर है, कॉपर सल्फेट का ओरिजिनल कलर कौन सा है, ब्लू, बट जिंक सल्फेट का कलर कौन सा होता है, व्हाइट। ओके, जिंक सल्फेट का कलर कौन सा होता है, व्हाइट। सो चेंज इन कलर, क्या हो गया, कलर चेंज हो गया। सो दिस इज द केमिकल reaction or chemical change. First one, gas is given out. Second one is change in color. Now third one, that is evolution of energy. Okay, third one, evolution of energy means in some chemical reaction, energy is given out or absorbed. कोई chemical reactions से, almost all chemical reactions accompanied by the energy change. During the reaction, energy, usually heat, is released or absorbed, and the reaction in which heat is evolved. Okay, generally ये होता है। Okay, heat is evolved or we can say given out. Okay, the chemical reaction in which heat is given out, and that reaction is called exothermic reaction, and the chemical reaction in which heat is absorbed or heat is taken, and that type of chemical reaction is called endothermic reaction. So how many type of chemical reaction on the basis of energy? So the reaction in which heat is evolved is called exothermic reaction, and heat is absorbed, absorption of heat, that is called endothermic reaction. So कार्बन है प्लस ऑक्सीजन है, हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट इज गिवन आउट। उसमें हीट क्या होती है, हीट इज गिवन आउट। अभी मैंने आपको एग्जांपल बता, कैल्शियम ऑक्साइड सुना है,
ओके, इसमें आपने वाटर ऐड किया, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम चूना बोलते हैं, उसमें मैंने वाटर ऐड किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है, एंड along with this heat is produced, इसमें heat form होती है. So the reaction in which heat is given out, that is called exothermic. ये जो दोनों रिएक्शन है किसकी है? एक्सोथर्मिक की. Now the reaction in which heat is absorbed, that is called endothermic reaction. For example, कार्बन है, सल्फर है, then हमें मिलता है कार्बन डाई सल्फाइड. क्या मिलता है हमें? कार्बन डाई सल्फाइड. ये कार्बन है, ये डाई है, ये सल्फाइड, कार्बन डाई सल्फाइड. देन नेक्स्ट वन कैल्शियम कार्बोनेट, CaO, कैल्शियम कार्बोनेट है, उसमें मैंने हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट, सॉरी, उसको हीट करना है. कैल्शियम कार्बोनेट वी गिव द हीट, कैल्शियम कार्बोनेट, इससे हम CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट इज टेकन. यहाँ पे मैं CO2 गैस है, दैट इज गिवन आउट, एंड माइनस हीट, यहाँ पे भी माइनस हीट, मीन्स हीट इज एब्सॉर्ब. कैल्शियम कार्बोनेट, हमें कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है, CO2 गैस रिलीज होता है, एंड हीट इज एब्सॉर्ब. सो जो केमिकल रिएक्शन में हीट एब्सॉर्ब होती है उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक चेंज. ओके, नाउ नेक्स्ट वन, चेंज इन स्टेट. सब्सटेंस से किसमें चेंज हो जाता है? स्टेट में. Now change in state of the substance. Change in state. First we have seen, first किसका चेंज हमने देखा? चेंज इन, फर्स्ट वन इवोल्यूशन ऑफ गैस, chemical reaction में gas given out. Then second one, that is evolution of energy, exothermic, endothermic. Then change in color. Now then next one, that is change in state. For example, that is H2O. Okay, H2O वाटर है, लिक्विड है, उसको उसको हमने उसका इलेक्ट्रोलिसिस किया, हमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस है. ओके, वाटर है, उसका इलेक्ट्रोलिसिस किया, वाटर में से हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की, हमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलता है, एंड जो हाइड्रोजन, ओके, ये जो H2O है उसका इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद हमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलता है, एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस है. सो इसमें क्या चेंज हो गया? स्टेट. क्या चेंज हो गया? स्टेट. नाउ फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. कोई कोई केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? प्रेसिपिटेशन फॉर्म होता है. फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन. So in some chemical reaction, there is formation of precipitation. So for example, copper sulfate plus H2S gas, then we are obtained the precipitate. Copper sulfate CuSO4 hydrogen sulfide gas. Okay, now ये जो रिएक्टर, ये दोनों रिएक्ट होते हैं, इसलिए रिएक्टर, एंड जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट. हमें कॉपर सल्फाइड का ब्लैक प्रोडक्ट, कॉपर सल्फाइड, ओके, ये कॉपर सल्फाइड, एंड प्लस नेक्स्ट वन दैट इज H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म होता है. सो दिस कॉपर सल्फाइड इज ब्लैक कलर प्रेसिपिटेट. ये हमें ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है. वैसे फेरिक क्लोराइड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, हमें फेरिक हाइड्रोक्साइड मिलता है जो कि ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट है, एंड अमोनियम क्लोराइड. सो केमिकल रिएक्शन के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक है? फर्स्ट वन,
chemical reaction में gas is evolution of gas. Then second one, change in color. Third one, formation of precipitate. Fourth one, evolution of energy. Fifth one, change in color. Now type of chemical reaction. So decomposition reaction. um, First one, combination reaction. Second one, decomposition reaction. Third one, displacement reaction. Fourth one, double displacement reaction. Fifth one is oxidation reduction reaction. Okay, chemical reaction के different type है. So first one is combination. Combination means A plus B दोनों कंबाइन हो गए, हमें क्या मिलेगा? A B. So मैग्नीशियम है, उसके साथ ऑक्सीजन कंबाइन हो गया, मुझे क्या मिलेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड. So this is the reaction of combination. ये कॉम्बिनेशन की रिएक्शन है. बैलेंस नहीं थी इसीलिए मैंने सामने टू टू ऐड कर दिया. कंबाइन, टू चीजें कंबाइन होती है, वैसे टू सब्सटेंस कंबाइन होते हैं, that is called combination reaction. Now next one, that is decomposition reaction. Okay, second one है that is decomposition reaction. So ये जो combination reaction A plus B, it gives AB. Now decomposition में क्या है? AB है, AB से हमें क्या मिलेगा? A plus B. Decompose. ग्लूकोज है, ग्लूकोज को हिट करने के बाद हमें कार्बन एंड वाटर मिलता है, दैट इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन. नाउ थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. So displacement reaction में suppose A plus BC है, A plus BC. So it gives AC plus B. It gives AC plus B. So ये A ने B को क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया. ओके, A ने B को डिस्प्लेस किया और उसकी जगह पे A जाके बैठा. फॉर एग्जाम्पल Fe plus CuSO4. Fe means ion, CuSO4 कॉपर सल्फेट. ये Fe कॉपर को क्या करता है? डिस्प्लेस करता है, हमें मिलता है FeSO4 प्लस कॉपर. ओके, हमें मिलता है FeSO4 प्लस कॉपर. ये Fe ने कॉपर को क्या कर दिया? डिस्प्लेस. सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट इज डबल displacement reaction. Next type of reaction, double displacement reaction. Double displacement reaction. So now in case of double displacement reaction, precipitation reaction in the aqueous solution to form the precipitate, and precipitate is insoluble product NaCl plus AgNO3, सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट, हमें सिल्वर क्लोराइड AgCl मिलता है प्लस NaNO3, AgCl का प्रेसिपिटेट मिलता है. H2SO4 प्लस NaOH, it gives Na2SO4 plus H2O. So in some reaction, neutralization reaction, acid react with base to give salt and water. So this one is the neutralization reaction. Acid react with base to give salt and water. And next one, oxidation and reduction reaction. Oxidation means addition of oxygen, removal of hydrogen. ओके, ऑक्सीडेशन मींस कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें ऑक्सीजन क्या हो गया? ऐड हो गया. सो व्हेन ऑक्सीजन ऐड और हाइड्रोजन रिमूव, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. रिडक्शन, addition of hydrogen, removal of oxygen. So H2O plus copper oxide, it gives copper plus H2O. ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. उसके अपोजिट रिडक्शन में addition of hydrogen, removal of oxygen.
That is called a reduction reaction. Now rusting of ion is the oxidation reaction. आयन है एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ, मॉइस्चर के साथ, उसकी रिएक्शन होती है आयन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर, इट गिव्स आयन ऑक्साइड. उसको हम क्या बोलते हैं? रस्ट. हाउ टू प्रिवेंट द रस्ट? जो आयन के ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर पेंट करते हैं, उसके ऊपर ऑयल लगाते हैं, गैल्वेनाइजेशन करते हैं, एलॉय बनाते हैं. So in this way we remove the rust, and rusting of ion is the chemical change. Like this there are so many chemical change. When we burn the magnesium ribbon, that one is also chemical change. Rusting of ion, that one is also chemical change. Okay. सो रस्टिंग ऑफ आयन जो है उसको हम रस्ट प्रिवेंट कर सकते हैं बाय पेंटिंग, बाय ग्रीसिंग, बाय गैल्वेनाइजेशन, कोटिंग ऑफ आयन विद जिंक एंड मेकिंग द एलॉय. एलॉय बना के भी, लाइक स्टील, स्टेनलेस स्टील एलॉय बना के भी हम रस्टिंग अवॉइड कर सकते हैं. So here I have taken quick revision or fast revision of chapter number 4, physical change, chemical change. Read the chapter very carefully, and if you have any doubt, then you can ask me on my personal WhatsApp number. Okay, Anushka? And excuse me, ma'am. Yes, ma'am. Is it okay, Anushka?